जो ये चेंज होता रहता है सक्सेस और फेलियर के साथ साथ में, वो उसने क्या सिखाया आपको? आई थिंक सक्सेस भी वो एक नशा है जो इट कैन बी अ कैच 22 फॉर पीपल। यहाँ पे फेलियर आपको ज़्यादा सिखा देता है। हाउ डू लुक एट दीज टू कमबैक्स ऑफ 2023? SRK के बारे में भी यही कहूँगा जो आपने कहा, सही कहा कि सडनली विद दिस स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ फिल्म्स, जिस तरह उन्होंने इसी साल में 2 बड़ी फिल्में दी हैं, उसके पहले इंडस्ट्री ने तो ऑब्वियसली एक तरह से कहा था कि ओके बॉक्स ऑफिस इज नॉट वर्किंग। हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी विद केके एंड एनी मेमोरी दैट यू हैव ऑफ केके? I really, that was a real shocker जब वो न्यूज़ आई, एंड इट वाज रियली गट रेंचिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग जब वो we all heard it in the industry. आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है गाना जो केके ने? I always duck this question. It's very difficult. Emraan is too good and the rest of Starcast support very well. आज के माहौल में it was very important कि the film does the numbers at the box office. Internationally and domestically we've got the numbers और हम बहुत खुश हैं उसके साथ. You feel that 2 days of World Cup it has in a way affected the box office numbers? It has. We would have clocked in. I don't know, मैं इस पे कोई फिगर डाल नहीं सकता हूँ because I'm not really a trade पंडित. Shahrukh Khan's cameo lights up the cinema hall. Hrithik Roshan cameo a treat to watch on the big screen after a long time after war. जो पिछले जो कैरेक्टर्स हैं पिछले टाइगर फ्रेंचाइज पार्ट से वो इस टाइगर 3 में आते हैं. Do you think it's your career best? So far, I don't know. ये देखिए आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं, और अगर ऑडियंस को पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो उनका जो एनालिसिस है हर ऑडियंस मेंबर के लिए वो अलग होगा. Would you ever try stand-up comedy? If you could go back in time and change Indian history, would you delete the partition of the country? Ooh, that's an intense one. What is the cheesiest pickup line that has been used on you? I can't talk about it over here. Firstly, because I'm in my house right now and my wife is just in the other room. Deep fake videos. Very, very scary. Extremely scary. Hi, this is Emraan Hashmi and you're watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. इमरान, कैसा आप महसूस कर रहे हैं जिस तरीके का एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पांस आपको मिल रहा है? मैं आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देख रहा था कि करियर में, ज़िंदगी में जो हैं वो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, but the important part is that you stay on course and this has been fantastic for you so far. Yeah, I mean आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि फ्राइडे को क्या हाल होगा फिल्म का. आप हर फिल्म को एक शिद्दत से मेहनत के साथ बनाते हैं, लेकिन फाइनली जो बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स आते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, रिजेक्शन, ये आपके हाथ में नहीं है. एंड ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली प्रेशर था. मोर देन मी, आई थिंक द इंटायर टीम जिन्होंने टाइगर फ्रेंचाइज को एक तरह से नर्चर किया है वो द पास्ट डेकेड, एंड ऑफ कोर्स ऑन मी ऑल्सो, क्योंकि पहली बार एक ऐसे एंटागनिस्ट को ये लोग पेश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली दे हैड काइंड ऑफ हाइप्ड इट अप ऑल्सो इन द ट्रेलर. बट आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे आपने देखा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस स्पीक द लाउडेस्ट, एंड फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो मैंने आपके साथ में बहुत ही आपके अलग अलग फेजेस में आपके साथ में मेरी बातचीत रही है, मुलाकातें रही हैं. जब आप एकदम बिल्कुल उफान पे थे और लाइन से आपकी फिल्में जो हैं वो बहुत कामयाब हो रही थी, बहुत क्रिटिकली एज वेल एज कमर्शियली. फिर ऐसे भी वक्त में आपसे बातचीत हुई है जब इत्तेफाक से फिल्में उस तरीके से नहीं चल पा रही थी. ये जो एक परसेप्शन विद इन द इंडस्ट्री जो ये चेंज होता रहता है सक्सेस और फेलियर के साथ साथ में, वो उसने क्या सिखाया आपको? यही सिखाया मुझे कि एक तरह डटे रहिए और कीप फाइटिंग, बिकॉज आई थिंक मैंने ये बात देखी है अपनी इंडस्ट्री में कि सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर. आई थिंक सक्सेस भी वो एक नशा है जो इट कैन बी अ कैच 22 फॉर पीपल. यहाँ पे फेलियर आपको ज़्यादा सिखा देता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली कि मेरी शुरुआती तौर पे भी इंडस्ट्री में इट वाज नॉट दिस ग्रैंड लॉन्च फॉर मी. मैंने जो कदम रखे इंडस्ट्री में इट वाज अ वेरी स्लो बट स्टेडी पेस, एंड देन ऑफ कोर्स हिट पे हिट मैंने दी पहले अपने 10-12 साल के करियर में. और मैंने कल भी किसी से ये जिक्र बात की कि ऑफ कोर्स
फिल्में चल रही थी, लेकिन एट वन पॉइंट आई फेल्ट कि बस आई वॉन्ट टू मूव ऑन टू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया करना है। मुझे पता था कि इसमें जब आप अपनी छवि को चेंज कर रहे हैं, कुछ अलग पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, पहले तो इंडस्ट्री भी ये चाहती नहीं है, दे वॉन्ट यू टू बी दैट सेफ्टी नेट, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है उनके लिए भी, वो मुनाफा है, उनको मुनाफा दिखता है उस चीज़ में। बट देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल्सो लल पीरियड इन योर करियर, ये हर एक्टर के साथ हुआ है। देयर हैव बीन दीज पीक्स and then finally the fall. No one has a consistent rise and stays there. You can see the examples of the best of actors and senior actors also. I think resilience एक बहुत ही important चीज़ है कि आपका फ्राइडे जैसा भी हो, ऐसी बात नहीं है कि आप निराश नहीं होते हो जब एक फिल्म फ्लॉप होती है, ऑफ कोर्स आप निराश होते हो, and you won't be human to not feel bad with a film not succeeding on a Friday at the box office. But then you have to dust yourself, get up, और 3-4 दिन के बाद get back into the war zone and try again. Alright, so अगर हम 2023 की बात करें, I think दो एक्टर्स ने जिस तरीके से और दो स्टार्स ने जिस तरीके का I think कमबैक किया है, वो I think एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक तो शाहरुख खान हुए, और जिस तरीके से he has come back from I think a very dull phase in a way as well. When people had, you are from within the industry, people had almost written him off. जब आपके पुरानी फिल्मों का रेफरेंस दिए जाने लगे और आपकी आज की फिल्मों का उतना बातचीत नहीं हो, तो वो एक तरीके का बैरोमीटर हो जाता है कि दैट अभी आपको एक हैज बीन वाले जोन में डाल दिया गया है। And the sort of reviews that you are getting is truly extraordinary in more ways than one. मैंने इनफैक्ट डैलस में देखी फिल्म यूएसए में, और जिस तरीके से सीटियां बज रही थी आपके, मुझे लगा था कि गेटी गैलेक्सी में बैठा हूं। So this is historic. So how do you look at these two comebacks of 2023? Well, you don't really, like they always say, the comeback is stronger than the setback. और SRK के बारे में भी यही कहूँगा, जो आपने कहा, सही कहा कि suddenly with this strong wave of films, जिस तरह उन्होंने इसी साल में 2 बड़ी फिल्में दी हैं, उसके पहले इंडस्ट्री ने तो ऑब्वियसली एक तरह से कहा था कि ओके बॉक्स ऑफिस इज़ नॉट वर्किंग, एंड यू काइंड ऑफ राइट, एंड इट्स वेरी हार्श है हमारी इंडस्ट्री में। आप फ्राइडे के फ्राइडे एक्टर्स को, स्टार्स को राइट ऑफ कर देते हैं। इट्स वेरी फैशनेबल, इट्स वेरी ट्रेंडी टू डू दैट। आजकल सोशल मीडिया पे भी, फॉरगेट अबाउट हमारी इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हैं या ट्रेड वाले हैं, या जो, वो तो ऑब्वियसली दे हैव अ सर्टेन रियलिस्टिक अप्रोच, और वो दे से इट एज दे से इट। लेकिन सोशल मीडिया पे देयर सो मच ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम पीपल जो हमारी इंडस्ट्री के पेरिफेरल इसमें भी नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द फिल्म इंडस्ट्री, सो इट्स वेरी हार्श। बट आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ वैलिडेशन कि आप मेहनत कर रहे हैं और फाइनली आपकी मेहनत कहीं रंग लाई है और फिल्म आपकी चल रही है, एंड there's an acceptability for the choices that you have made. ऐसा नहीं है कि आपकी पहली choices were in some way not measured. It's just that things don't fit sometimes. जब एक फिल्म बनती है, बहुत सारे variables होते हैं. Every actor, every star, जब एक फिल्म आप के लिए साइड आप करते हैं, तो you put your best foot forward. No one makes, or no one's intent is to make a flop film. कभी-कभी समय खराब होता है, the environment, the audience कुछ नया देखना चाहती है. There are a lot of variables at play. So it's just time, and like they say, time heals, and also time changes the tide. So yeah, that's what's happened with this also. Alright, मैंने आपको, जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने आपके बहुत से फेजेस में मेरी आपसे बातचीत रही है, और इवन आई थिंक ऑफ कैमरा भी बातचीत रही आपके साथ में काफ़ी। मैंने आप में कभी बिटरनेस नहीं देखी। मैंने कभी आज तक कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हों, या फिर आप कोई अगर फिल्म नहीं चले तो ब्लेम किसी और पे आप दें। ये एक सेल्फ अश्योर्डनेस कहाँ से आती है? आई थिंक एक डिसकनेक्टेडनेस, शायद ये एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं देखता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग इस ट्रैपिंग में, इस इंडस्ट्री के ट्रैपिंग में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं, एंड इट्स 24/7 फिल्म्स फॉर देम, व्हिच इज़ फाइन, ईच टू देयर ओन। लेकिन मेरा हमेशा से पहली फिल्म से ये एक थोड़ा सा आई बैक ऑफ टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक तरह से आइडेंटिटी इस चीज़ से आप सोर्स करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने करियर से, अपने स्टार स्टॉक से, तो it will be a tough journey ahead. So I think the bitterness comes from that. Or also bitterness comes when you're constantly engaged with क्या लोग कह रहे हैं, और उस
जो लोग कह रहे हैं वो आप उसको ज़्यादा तवज्जो, यू गिव इट अ लॉट ऑफ वेट एंड इम्पोर्टेंस, तभी एक तरह से एक नेगेटिव फीलिंग आती है. आई डोंट रियली केयर व्हाट पीपल से. मेरी चॉइसेस जो पहली फिल्म से लेके आज तक बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, बट आई थिंक इट्स बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, और जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है और एक ग्राउंडिंग है, आई थिंक द सडन you're unwavered in your approach जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, when the chips are down. Alright. एक और बहुत ही आई थिंक दिलचस्प जो आपका फैसेट है वो विच इज़ वेरी यूनिक टू यू, कि ये आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द फैक्ट दैट whatever they see or whatever they hear, that is exactly what you mean, and that is exactly what you're trying to say. You don't gossip behind the backs, and that is something that everyone agrees with. बहुत बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में फेक रिस्पेक्ट का मुजाहरा होता है. जैसे सलमान सर डज नॉट लाइक द फैक्ट कि सल्लू भाई कहा जाए उनको, या फिर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन कॉल्स हिम भाई एंड ऑल दोस थिंग्स. मेनी टाइम्स शायद मे बी इफेक्ट के लिए भी कहा जाता है, शायद इज्जत फील नहीं की जा रही है. आप सलमान कहते हैं, लेकिन इट्स वेरी अपरेंट दैट यू हैव दैट रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एज वेल. ये बैलेंसिंग किस तरीके से आप करते हैं कि दैट एक जो जैसे आपने सेल्फ अश्योर्डनेस की बात करी, वो कहाँ से स्टेम करता है? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये सेल्फ अश्योरेंस आपके काम से आता है, आपकी मेहनत से आता है, आपके बैकग्राउंड, आपके टेम्परामेंट से आता है. यू हैव टू वर्क ऑन इट डे आफ्टर डे. और ये सेल्फ अश्योरेंस यही है कि एक इंडिपेंडेंस है. अगर आप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल सेट पे काम करेंगे, अगर उसको रोज़ आप कहीं ना कहीं नर्चर करेंगे फिल्मों के ज़रिए या जो भी हो, वो एक सेल्फ अश्योरेंस तो आ ही जाता है. फिर उसके बाद यू डोंट नीड टू सक अप टू एनीवन. एंड माइंड यू, आई रिस्पेक्ट एवरीवन. आई माइट नॉट कॉल सलमान भाई, बट आई टेक हिम एज अ ब्रदर, आई टेक हिम एज अ फ्रेंड. और मुझे उस तरह जिक्र करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू गो आउट देयर एंड टॉम अबाउट इट एंड पुट अ लेबल ऑन इट बिकॉज अदर पीपल कॉल हिम दैट. तो आई थिंक रिस्पेक्ट उस वर्बली जो आप चीज़ें कहते हैं उससे नहीं जाहिर होती है. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम योर बिहेवियर. आपके एक्शंस से कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं किसी और के लिए. एंड आई ट्रूली बिलीव दिस, और ये मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग है कि मैं सब लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ. आई डोंट काइंड ऑफ इन एनी वे सेग्रीगेट पीपल ऑन अ फिल्म सेट. सभी लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं. एंड दैट्स आई थिंक थैंक्स टू माई ग्राउंडिंग एंड माई फैमिली बैकग्राउंड. राइट. सो आज ऑफिस में बड़ा एक हमारे एक्साइटमेंट था यहाँ पर, और आपकी किसिंग के चर्चे फॉरन के हिसाब से हुए. You know, we have discussed this many times in the past as well, कि that I think वो थोड़ा सा overdue है वो आपका किसिंग का एलिमेंट, लेकिन जो एक सेरिब्रल जो आप लेके आ सकते हैं, शंघाई में हमने देखा है, काफ़ी फिल्मों में हमने देखा है, which is very unique. And I think जो एक बिलीवेबिलिटी है, अगर आतिश की बात करें, जो उसका मोटिवेशन है, जो उसका रीज़न है उसके एक्शंस का, मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली इस तरीके से वेल एच्ड आउट कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं कि आप जो एंटागनिस्ट है या नेगेटिव लीड कह लीजिए, उसके जो मोटिवेशन है बिहाइंड हिज एक्शंस, उसको आप कुछ हद तक जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि यार इसके साथ बुरा हुआ. सो ये शायद एंड ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज डूइंग. वो और उसको फिर पर्दे पे लेके आ पाना, जब रिद्धि डोगरा का जब द एंटायर शी डाइज एंड द वे यू सो लाइक अपसेट एंड हर्ट, बहुत ही मिक्सचर था इमोशंस का आपके चेहरे के ऊपर. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपने बहुत एंजॉय किया वो सीन. नहीं, वो सीन बहुत डरावना सीन था मेरे लिए, और उस सीन का एक बहुत ही अनयूजुअल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो सीन पहले वैसा लिखा नहीं गया था. मनीष हैज दिस अनकैनी नैक, वो शूट से पहले 1-2 घंटे पहले आपके डायलॉग्स चेंज कर देंगे और सीन की स्टेजिंग चेंज कर देंगे. तो ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी ऑल्सो अ सर्टेन प्लस पॉइंट, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया इंटरप्रिटेशन लेके आ रहे हैं हर सीन में. एंड सीन एक बहुत ही ट्रेडिशनल सीन था अर्लियर, जहाँ उस कैरेक्टर के साथ ये होता है और आतिश इज इन अ फिट ऑफ रेज. वो जो करता है वो करता है विद जोया, एंड ही फील्स जिल्टेड, ही फील्स, क्योंकि जोया उसकी प्रोडिजी है. लेकिन आई थिंक शूट के कुछ चंद घंटे पहले मनीष ने रीराइट किया एंड ही सेड दैट दिस पूरा ग्राफ है जहाँ पे ही ब्रेक्स डाउन
to the point where he laughs, then suddenly that becomes sorrow and grief, और वो एक rage में कहीं बदल जाता है. And that is a dream for an actor to play, but also it is a nightmare for at the last nth hour. लेकिन thankfully क्या हुआ कि उस दिन वो shoot thankfully किसी वजह से cancel हो गया था, और मुझे थोड़ा काम, I could have worked a little hard. I did work a little harder on that scene to extract that emotion. लेकिन I think जो interpretation मनीष लेके आए हैं कैरेक्टर को, जो इंटरप्रिटेशन मेरा है, जो इसकी जो राइटिंग है श्रीधर की, अंकुर जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, इट इज़ अ वेरी अंडरस्टेटेड एट द सेम टाइम वेरी इम्पैक्टफुल. और जो आपने कहा कि ये जो फ्लैशबैक का पोर्शन है, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद ही ये कैरेक्टर प्ले करता. आई वुड हैव साइंड ऑन टू इट, क्योंकि फिर एक बहुत ही यूनिडिमेंशनल फॉर द सेक ऑफ बीइंग विलेनस उस किस्म का कैरेक्टर बन जाता. बट ये एक तरह से जस्टिफाई, एक तरह से खुद की जिंदगी में, एक जस्टिफिकेशन नहीं कहूँगा, बट द रीजन वाई ही बिकम्स द आतिश, ही बिकम्स प्रेजेंट डे में. और शुरुआत में भी दिखाते हैं कि ही इज ऑलमोस्ट सो चाइल्डिश एंड इमेच्योर इन द फर्स्ट सीन, कि आप देखते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था. Everyone doesn't start off evil unless you're obviously a psychopath or sociopath. But in this case, the environment changes him, circumstances change him, और इसकी political ideology कहीं ना कहीं through the years gets etched and ingrained. So that was very interesting for me. Okay, एक और भी interesting part है कि that I think it's predictable that you are having like say man-to-man fight for example and hand-to-hand combat, जो कि एक I think तस्वुर है हीरो और विलन के बीच में. यहाँ पर लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यहाँ पर एक सार्केज्म में और प्रोवोकेशंस हैं, which I saw people enjoying a lot when you are provoking. Salman Khan was, and I think it makes it different as well. Did you enjoy that? I loved it. वो मुझे पहली चीज़ बहुत ही कैप्टिवेट की स्क्रिप्ट की, और वो ये थी कि ये एक अलग किस्म का एंटागनिस्ट है जो साइकोलॉजिकली अपने एनिमीज़ को तोड़ना चाहता है. दैट इज़ हिज गेम. और ऐसा नहीं है कि उसमें फिजिकलिटी नहीं है. ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द मिलिट्री देयर, उसकी भी एक फिजिकलिटी है. ही कैन पैक अ पंच इफ़ ही वांट्स टू. लेकिन वो पहले तो इसके नाम को टार्निश करना चाहता है. He wants to break him in a way that even Tiger and Zoya don't really expect it coming to them. अगर ये अगेन एक फिजिकलिटी ऑल ब्रॉन मैनिक्योर्ड विलेन या एंटागनिस्ट होता, लेदर जैकेट, ग्लेज, स्लिक्ड हेयर एंड ऑफ कोर्स रिपलिंग मसल्स, दैट इज अ वे टू टेक इट ऑल्सो. लेकिन फिर उसमें नई बात क्या होती? आई थिंक इसमें जो सेरेब्रल, इंटेलिजेंट, स्वाव, एक सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी थी आतिश की, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी फिल्म में. एंड दैट वाज वन ऑफ द अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम हिज आइडियोलॉजी in the film that justifies his actions for him was a reason क्यों किया मैंने. Okay, इमरान, आपने आप कई सालों से आप काम कर रहे हैं. you've been one of the very few stars जिसने consistently hits दी हैं, अच्छा काम किया है. Over the years entertainment का आपके according definition कैसे change हुआ है आपके लिए? I think over the course of 20 years बहुत सारे paradigm shifts हुए हैं. कंसेप्चुअली फिल्में कैसी लिखी जाती थी, ऑडियंस की टेस्ट्स, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स द जनरेशन दैट वी वर केटरिंग टू बैक देन वाज वेरी डिफरेंट. अभी जो जेन जी हो, जेन वाई, मिलेनियल्स, उनका एक टेस्ट बहुत ही अलग है फिल्मों को लेकर, क्योंकि एक उनका एक्सपोजर भी इतना बढ़ चुका है. इन द पास्ट probably 10 years, 7-10 years, before that also, from probably internet when it boomed in India, तभी से कहीं it started gradually going to more progressive, globalization. आपने इतना सारा content आपने देखा है from very young age, and take my son for that matter. अभी से from 5 years ago, from when he was like 6-7, the kind of content that he's been seeing on YouTube, his tastes are so different from my tastes or your tastes. और OTT के साथ भी again a big paradigm shift, क्योंकि there's so much abundance of information and paradox of choice. आपके पास इतना सारा choice है, it spoils you.
फिर आई थिंक लोग थोड़ा ज़्यादा भी क्रिटिकल हो जाते हैं फिल्मों को लेकर. आजकल एक एवरेज ओकेश फिल्म will not make it a cut in the theatrical business. It has to be spectacular. छोटी फिल्म होगी या बड़ी फिल्म होगी. एक्चुअली छोटी फिल्मों का तो अभी it's probably the worst time theatrical, क्योंकि people are getting those concept films OTT पर. तो क्या है वो जो उस फिल्मों के लिए the middle of the line film or the smaller film क्यों जाएंगे थिएटर में देखने के लिए? That's a big shift that's happened after COVID. No one really has the answer to that. Hollywood also has been kind of grappling with that. इसलिए उन्होंने Marvel बनाया, and then you have this multiverse and all, and you have the spectacle where you can go to the cinema hall, big sound, big screen experience, और आप वो देख सकते हैं. And I think right now we are somewhere there also. The big films probably वो एक it becomes more of a success ratio, it becomes a more safe bet. लेकिन वो भी अच्छी होनी चाहिए कहानी के तौर पर and everything else. So it's been a big shift, और वो change होता रहेगा. पता नहीं next shift क्या होगा. AI के ज़रिए या VR के ज़रिए what will be the next experience which will spoil the audience, और फिर और भी problem होगी OTT को भी और theaters को भी. That I'm very interested to see what happens next with entertainment. Okay, so Emraan, you are extremely popular in Pakistan. What do you have to say to your fans in Pakistan? Well, actually ये मैंने कई बार जिक्र किया है कि जो पहली फिल्म थी which opened the doors for the Pakistani audience there, हमारी फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी वहाँ, and वहाँ से एक I think एक fandom, you know, the fans started enjoying my films even more theatrically there. जन्नत के लिए मैं गया था प्रीमियर के लिए, and the love that I got there from the people there, I can't even begin to explain. बस यही कहूँगा उनसे कि आई जस्ट होप दैट इन सम कैपेसिटी आप अगर यू अब्रॉड, आई नो वहाँ पे पाकिस्तान में थिएट्रिकली फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं, बट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान जो आप इंटरनेशनली फिल्म देख रहे हैं, आई होप यू लव्ड टाइगर, एंड या वांट टू कीप एंटरटेनिंग यू गाइस. ओके, सो इमरान, मैं काफ़ी अब इंटरव्यूज़ में आपके देख रहा हूँ, और उसमें I think almost everyone is asking you about the fact कि गाना नहीं है टाइगर 3 में. प्रीतम के साथ में आपने पहले भी बहुत से आपने करे हुए हैं. मेरे एक सवाल मेरे जहन में कॉन्स्टेंटली मेरे आ रहा था, और वो सवाल ये था कि आपने केके के साथ में आपने बहुत कोलैबोरेट किया है. केके हैज़ sung some of your biggest hits. How do you look back at your journey with KK, and any memory that you have of KK? I really, that was a real shocker. जब वो न्यूज़ आई, and it was really gut wrenching and heartbreaking जब वो we all heard it in the industry, and मैंने उसके बारे में पोस्ट भी किया था. My fond memories of KK जब वो मेरे गाने when he used to dub for it, when he used to sing for it, कभी हम जाते थे मुकेश जी भट्ट साहब हम सब to see the recording, and he was such a gem of a performer and a person also, such a wonderful person, such a nice positive aura he had about himself, so down to earth, so simple. और जिस तरह उनकी गायकी थी, there's no one like KK. और जिसे कहते हैं कि true artists, they don't pass on, they don't go away. I think they live through their talent. उनके गानों के ज़रिए वो live on करते हैं. So that's exactly what KK is. आपका personal favorite कौन सा है गाना जो KK ने आपके लिए I always duck this question. It's very difficult. They're all my babies. I love all my songs. I can't pick. I've just been so grateful, with KK, with everyone, Preetham, in sabhi artists के साथ, the kind of songs that they have given me. I'm truly blessed to have so many and such a large bank of wonderful songs and chartbusters. हर film में. Okay, so what are the sort of offers that you've been getting with the last few days? Well, right now I think the industry is kind of recalibrating a lot of things. Of course, there are offers always pouring in, and abhi kya hai na ki you have to really weigh the project and think about it before you sign on the dotted line. क्योंकि like मैंने पहले कहा कि theatrical films वहाँ रिलीज़ करना and the kind of film, शायद 5 साल पहले आपको एक स्क्रिप्ट पसंद आ गई और आपको ये नॉवल और यूनिक लगी और आपने कह दिया कि ठीक है मैं करूँगा,
बट अभी अभी के मार्केट में ऐसा हो गया, इट्स बिकम सो टेस्टिंग कि ऑडियंस बिकम सो पर्टिकुलर उनको क्या देखना है. इट विल टेक अ लॉट टू गेट देम आउट ऑफ देयर होम्स टू गो टू द थिएटर एंड वॉच अ फिल्म. तो जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, आई एम रियली वेइंग, आई एम टेकिंग माई टाइम, से पहले कि मैं अगला फिल्म साइन करूं. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर द स्टोरी, everything is worked on to the T, everything is really, you know, up there, and we don't leave any things to chance. लेकिन I think it's a good time. I think टाइगर के बाद जो लोगों ने इस कैरेक्टर में मुझे देखा है, आतिश के कैरेक्टर में, that's really opened up some, you know, creative space कि अच्छा we can think about more options to kind of project and through scripts and bring scripts to me. Okay, so Imran, I've taken a few fan comments on your performance in Tiger 3. Let's see what your fans have been saying. जी. So this is Parmeshwar Shaw, and he says that Emraan Hashmi is all fire and acid. The antagonist packs a punch with a knockout performance. Thank you. That's so sweet. Is all fire and acid. Yeah. Well, that was the whole idea. You know, I don't know if it's a good compliment or a bad or an insult, but you know, my friends keep telling me that, you know, we're so fond of you, but we wanted the worst things to happen to you on screen because वो है एक toxic character आतिश. And this is the same reaction मुझे gangster film के लिए भी मिला था कि people hated this guy on screen. You know, my wife was telling me, I wish you died when I saw you on screen. I wish Atish died soon on screen for the bad things that he was doing. But yeah, he is fire and acid and all of that. All right, this is Saqib Bashir. Imran is too good and the rest of Starcast support very well. One thing I'm sure of is this movie is gonna break many records and create many new ones. That's so nice. Well, yeah, I mean, thank you, Saqib. I think, of course, जो पहले भी मैंने बात कही कि, you know, there was this huge responsibility इस फिल्म के साथ, इस कैरेक्टर के साथ to project it, and also the numbers. आज के माहौल में it was very important कि the film does the numbers at the box office. Internationally and domestically, we've got the numbers और हम बहुत खुश हैं उसके साथ. Especially जब फिल्म दिवाली के वीकेस्ट पीरियड, जो कहते हैं ना कि हमारे इंडस्ट्री में जो वीकेस्ट पीरियड आता है दिवाली का होता है, and it's clocked in highest history in Bollywood of film release on Diwali, and also the opposition World Cup ka, our team doing fantastically well, and it's really done the good numbers, so we all happy as a team. But you feel that 2 days of World Cup, it has in a way affected the box office numbers? It has. We would have clocked in, I don't know, मैं इस पे कोई figure डाल नहीं सकता हूँ because I'm not really a trade pundit, but anyone's guess. Logically, अगर ये जो momentum नहीं होता cricket का, and of course Sunday release जो कहते हैं कि again, you know, लक्ष्मी पूजा थी और सारी चीज़ें थी, उस दिन I think हमारे evening shows भी थोड़े weak पड़ गए. Despite that, the film is done really well at the box office. This is Manit Verma. Katrina Kaif shines as the leading actress. Emraan Hashmi, best choice to cast in the role of the villain. Supporting actors like Kumud Mishra, Ranveer Shori have done a fine and commendable job in the film. Shah Rukh Khan's cameo lights up the cinema hall. Hrithik Roshan cameo, a treat to watch on the big screen after a long time after war. Supporting actors, Kumud Mishra, Ranveer Shori, and a lot of others. How crucial were they? Oh, of course, they've all played their parts very well. और यही एक खासियत है ऑफ गुड परफॉर्मर्स और ऑल्सो एक अच्छी स्क्रिप्ट की और अच्छी फिल्म की कि आप हर कैरेक्टर को कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करते हैं फिल्म में. देयर इज एन इमोशनल एंगल ऑल्सो और ऑफ कोर्स एक प्रीवियस मेमोरी बैंक जो पिछले जो कैरेक्टर्स हैं पिछले टाइगर फ्रेंचाइज पार्ट से वो इस टाइगर 3 में आते हैं एंड दैट क्रिएट्स द इम्पैक्ट और उनके परफॉर्मेंस से भी everyone has done a fab job. All right, Ashutosh J. Salman is emotional and has controlled aggression as good as Sultan. Katrina and Imran have given their career best. Do you think it's your career best? So far, I don't know. ये देखिए आप
ऑडियंस से पूछ सकते हैं, और अगर ऑडियंस को पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो उनका जो एनालिसिस है हर ऑडियंस मेंबर के लिए वो अलग होगा. लेकिन I think it was an interesting character, of course. I had fun playing Atish. It's definitely up there क्योंकि मैंने बहुत अपने करियर में चंद एंटागनिस्ट के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. शोएब एक दूसरा कैरेक्टर था which I really enjoyed playing, and I think with that I think on the same level somewhere आतिश के कैरेक्टर के प्ले करने में I think there was something nuanced about it, like शोएब that was a different world. उसमें एक underworld की दुनिया थी, इसमें of course this espionage, spy universe. But I think both of them as far as antagonists, I think they are somewhere on the top there. Kunaid is saying Salman Khan as Tiger deserves the maximum credit for the conviction and screen presence he portrays. However, Katrina Kaif as Zoya is no less and contributes equally. Emraan Hashmi as the protagonist is menacing and deserves appreciation as well. Thank you, thank you. Yeah, I think everyone has done. Salman also has done such a wonderful job in this film. जैसे पहले I think आशुतोष ने कहा कि बहुत ही restrained है फिल्म में, at the same time impactful, and Katrina really packs a punch with her action and also the emotional scenes. All right, Akashak. Salman Khan delivered one of his best performances. He is the darling of the masses. All he was looking for since 4-5 years was a good script, and Tiger 3 has it all. Katrina Kaif was brilliant, especially in action scenes, undoubtedly the best action actress in Hindi right now. Emraan Hashmi, as always, did brilliant acting, and man, his background score was so good and menacing. So a lot of talk about your background score. Yeah, thank you, Akashak. That's actually, that's one जो जब मैंने फिल्म देखी, it's one of those haunting background scores जो आपके जहन में, आपके दिमाग में replay पे बजता रहता है. And it was, yeah, it's one of those iconic BG tracks for an antagonist. Really enjoyed that. और वो पूरे एक तरह से एक character के swag और वो एक उसका aura उसको uplift करता है वो track. Okay, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर hand to hand combat से ज़्यादा between Salman and you जो I think सबसे ज़्यादा जो whistle worthy moments आ रहे हैं वो dialogues के हैं. जी. And it's happening in a dark and dingy place where the light is on your face, and That's right. that becomes a character in itself. Yes. Do you think that enough credit is given to technicians, for example, like say lightmen and the way like a scene is lit, for example? No, I think we should. और मैंने हमेशा ये चीज़ strongly हर फिल्म में कही है कि film making कभी एक या दो लोगों का एक contribution नहीं होता है. There are hundreds and hundreds of people behind the scenes जो कभी कभार सिर्फ set पे नहीं होते हैं. I mean, due credit to, of course, the entire team, cinematography team, lighting, sound, हमारे जो VFX हैं फिल्म में, they're spectacular. जो मैंने वो टाइगर पठान की जो VFX sequences और वो helicopter का and cars and the explosion on the bridge, there's so much of finesse in that scene. I actually saw the film दूसरी बार उस scene के लिए for the Tiger Pathan sequence. But yeah, every department, the editing, sound, background, I think the spa excellence, or I think film, that's the beauty of filmmaking. There's so many departments जो synergistically साथ में आकर वो experience audience को देते हैं. I think kudos to all of them. So Emraan, we'll end this interview with a rapid fire with you. Yeah. All right, so rapid fire. Always get myself in trouble in this one. I don't know. You're also going to get me in trouble in this one. It's so amazing. Your rapid fire reels keep on popping up. They are hilarious. I know. Okay, name 3 things you can't resist. Eating good food, working out, and acting. Okay, name 2 Salman Khan movies that you like. मैंने प्यार किया, अंदाज़ अपना अपना. Okay. What will be the reason why Emraan Hashmi would get late for a meeting considering he's always on time? Traffic, but still I factor in traffic. मैं check करके I kind of prepone my exit from wherever I'm leaving. Yeah, I think punctuality is something which is amazing as far as you're concerned. Which body part you enjoy working out in the gym? All. I tell you which one I hate, working out legs. Because it's very draining, but I do it twice a week. But I think, yeah, one
My best would be shoulders, actually. Yeah, shoulders. All right. Okay. What is it that you must do before going to bed in the night? Read. Are you writing another book or something? Is that something that? Not at the moment. वो एक Not at personal memoir था. तभी वो एक incident हुई थी 2014 में. Maybe when I look back at some point about the industry or something, maybe something in the future, but not anything at the moment. All right. Would you want to be 25% happier, but the catch is you have to walk 25% slower? ये कैसा सवाल है? 20%, 25% happier, but walk 25% slower. Yeah. Yeah, why not, man? I mean, if it's getting me 25% more happiness, why not? Okay. Have you ever been starstruck? Oh yeah, I have actually. I have. With whom? Crazy starstruck. Aishwarya Rai. Okay. You were Yeah, starstruck. I was. She's one of the few. I've never done this before. Actually, I was an assistant director and I waited outside a van. I was waiting outside a van with my cousin Mohit Suri. That time we both were assistants, and I waited for at least like 1.5 hours. I've never done that before. It's ridiculous. Which film? I look back. We were assisting for Raz. I think मैंने उनकी फिल्म उससे पहले देखी थी हम दिल दे चुके सनम. Right. I was a huge fan and I wanted to get a glimpse of and actually see her in person. So I've Amazing. done that. Yeah. Okay. If flirting is an art form, then what 3 tips would you like to share? Be yourself, be spontaneous, and just be authentic. Be authentic. What is a good spy code name for you apart from Atish? Spy, I don't know, I guess, some number, I guess, would be very deceptive and, yeah. Okay. Have you ever written a song for someone? No, I've never. I think I'd be very terrible at that. No, thankfully I've not. Would you ever try stand-up comedy? No, I've never tried it. I don't think that's my thing. I don't think I would try it, no. Okay. What is your go-to karaoke song? There's an old song. I used to sing this a lot in karaoke, also in college. Wonderwall, if you have Oasis, it's an English song. Millennials and all won't know about this. This is 80s kids who know about it. Wonderwall. Okay. When did you search your name in Google last? I think yesterday, last night. I try not to, but sometimes just to see what's coming down in articles, I do. Okay. If you could go back in time and change Indian history, would you delete the partition of the country? Ooh, that's an intense one. Yeah, I think I would, of course. Anyone would. Okay. What is the cheesiest pickup line that has been used on you? Cheesiest. It was not so much what was said, it was the action. It was kind of cheesy. I can't talk about it over here. Firstly, because I'm in my house right now and my wife is just in the other room. All right. Okay. Ye ya wo, either or, if you have to choose one. A night out ya a night in? Depends on my mood. Depends on my mood. Both, I guess. Okay. Salman Khan ya Shah Rukh Khan, better sense of humor? I haven't interacted that much with SRK on that level. But I think both are on par. Like I've seen SRK on stage. He's got a very, very witty sense of humor. Salman has got a very different kind of sense of humor. But they all, you know, they've both got their strengths. Travel to the past ya travel to the future? I think I would travel into the past. Mukesh Bhatt ya Mahesh Bhatt, the Bhatt you're closer to? Am I closer to Bhatt Saab? Mahesh Bhatt. Pooja Bhatt ya Alia Bhatt, the better Bhatt actress? The better Bhatt actress. I think you can't really pick one, right? I mean, it's two different eras. I think both of them had that. Alia's got that X factor right now. When Pooja came out, I remember seeing her in Dilay Ki Mantani. Again, same X factor. I think both, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं. Okay. Raz ya Murder, franchisee closer to you? I would say
I would say murder. Okay. If you have to choose between the two, which one would you choose, even if reluctantly? Film parties or gossip? Film parties, come on, man. The most boring thing. Gossip. Okay. Cerebral films or mindless fun films? Yeah, mindless fun films have that appeal. Yeah, you could just episodic, sit back, watch them. Okay. Your thoughts on the following. Censorship. I think it needs to be kind of structured better. I think it's right now a little haywire with the way things are being censored. It sometimes also there's a lack of logic to what is censored. So I think needs some structure and thought. Deep fake videos. Very, very scary. Extremely scary. अभी अगर ऐसे videos आ रहे हैं which are astounding and you can't really tell that it is someone else and it's been kind of morphed. It's scary to know what the future will hold in the next, probably the turn of a year or two. News channels. Credibility is a bit of a question mark. Not all, but yeah, I don't watch them anymore. I really don't watch them. Patriotism. Shouldn't be worn on your sleeve in that sense. It's something that you have to kind of own and believe in. वो जो ऊपरी चीज़ होती है ना, externalize it just for the sake of it. I think you have to own it and kind of believe in the aspect of patriotism. Okay, true or false? Emraan Hashmi is the king of kissing in Bollywood. Come on, that's a silly question. You know the answer to that. Box office validation is something that everyone in the film industry lives for. Of course, I think it's very important because that really shows you how far and wide your film has gone. But again, एक side भी है जो अगर वो नहीं मिला तो at least चलो critical acclaim तो मिल ही जाए, तो you know it kind of just it eases the pain. All right. Emraan Hashmi's best is yet to come. Of course, I believe that. I shall direct a film or show at some stage. No, I don't think. I don't have the patience to do that. I don't have the mindset to do that. But again, never say never. But at the moment, no. Purely acting. Never say never. All right, Emraan Hashmi, thank you very much for your time. Always pleasure talking to you. Pleasure always. And thank you so much. Congratulations to you once again. And I'm sure that this weekend is going to be big as well. And all the best wishes. Looking forward to all your future ventures. Thank you so much. Thank you, Faridoon. Pleasure. Take care. Bye.